ये वो द ब्रेकफास्ट रिमोट हमारा सूर्या एग्रो इंडस्ट्री करके। शी इज अरुणी प्रियंका। हेलो भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ाओ। अपना ही बंदा है। आराम से उतर रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। And we are happy, so it's a happiness festival as well. It's already ICT बॉम्बे में ग्रीन टेक्नोलॉजी, और ग्रीन टेक्नोलॉजी का थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। और बॉर्न ही आर्टिस्ट हमारा सूर्या एग्रो इंडस्ट्री करके है। सूर्या मसाला, सूर्या चिकन मसाला, सूर्या गरम है। मेरा माँ का गाँव। अच्छा, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, माय फेवरेट। यहाँ पर ऐसे जंगल जैसे ही है ना, तो ये नहीं आते जानवर वानवर का। किसी को मत बोलो, सोएगा नहीं। हाँ वही, इसको भी मत बोलो आंटी, ये भी देती है। एक 5 मिनट का रास्ता है चल के भी। तो रात को उनको याद नहीं, 3 कुत्ता है, 2 को बांधा, एक किधर गया देखा नहीं, कभी दिन में ही लेके गया। आपको डर नहीं लगता? ऐसे डर वो लोग अपने को कुछ नहीं करते, सच में बोल। वो लोग एक पर्टिकुलर सिटी में क्यों करते हैं कि सिटी में खाने को ही नहीं मिल रही, तो उनको सब खाने को मिलता है। लॉजिक। बाबा आमटे का देखा है क्या पिक्चर? नहीं बाबा आमटे का एक बार तुम उधर भी जाते उधर सब उसके फ्रेंड है टाइगर। तो हमारे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आसाम, और दूसरा हम इंडिया का दूसरा आसाम नेत्रावली बोल। 110 120 ऊपर को स्वीट लगेगी। थैंक यू। अलग स्वीट डांस बोले। वो फ्लड हो रहा है, वो फ्लड के लिए ही डर रहा है, इधर भी फ्लड है। कितना जानवर मर गए, सब वो पानी भरा है, बह नहीं हो रहा है ना उसे। वो शेर का बच्चा घर किसी के घर में घुस के उनके बेड के डर गया ना, जानवर भी डर गए। लुक एट द स्किन। और मैं कुछ भी लगाया नहीं आज तक। 57 रनिंग मेरा। ए विभाव हे मेरा देवर का लड़का, ही परवरीचाच असता आसामात नाही। बरं दिसलंय म्हणाले। कंटिन्यू Keep talking, probably you won't finish this till lunchtime. There's so many stories to tell. back-to-back activities, and we are not getting time for ourselves. It's like you cannot miss video them we are not because- able to talk. Obviously camera on करके रखा था so that you guys come to know what we are doing, but actually we have been so active here. Every day she would get up and like इतने प्यार से किसी ने नहीं उठाया यार जिंदगी में, इतना प्यार से मोटिवेट कर देती है ना, ऐसा लगता है कि यस Yeah, I thought I will not wake up. I will not wake up today. I I will told you the skip same. this. सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को, but at the same time we are not able to explain it because we are not in front of the camera all the time, and we are doing back-to-back activity. Like breakfast, we are out for 1 or 2 hours, and again come back, do breakfast here, and then there's an activity area here. So we start with a workshop things, like back-to-back चल रहा है, बीच में थोड़ा टाइम। I haven't taken a proper shower. ये तो दिखाना ही चाहिए हमें। Both are wearing Fitbits. This is not a sponsored video, okay? We're wearing Fitbits. कभी क्रॉस ही नहीं होता। 930 steps. 682. Good job. So it's like हमारा सुबह ही पहले 1-2 घंटे में हमारे 1000 से ऊपर स्टेप चल जाते हैं till we come back and do everything. It's like 8,000 to 9,000 steps are happening every single day, right? Yes. 8,000 to 9,000 of like average वही चल रहा है कि हमारा हो ही जाता है, and we are like that's the reason maybe we are having body ache and all, because we are not used to that kind of active life environment. Yeah, organic food. It looks very simple, guys. But It is very simple. yeah, लेकिन trust me, जो taste है ना, वो taste ही अलग है यार यहाँ पे। Do you also see a difference in your digestion? उसी में आ रही थी। Like मेरा sleep pattern के बीच में वो food याद आ गया ना, so I'm telling them कि ये हो गया। Otherwise, I have chronic disorder. I'll say they use heavy words because actually, Piku movie मेरे से inspired थी शायद। I feel.
So now we are going to the waterfall. I hope that will be exciting because This place जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, I have heavenly. no idea what's the name. I mean, what is that place? I don't want to reveal it now. I just know it's a okay. That's why. Oh, you know the name? Yeah. So how we are very excited to cover this. I want to see the expression on our face. So there is Lakshman with my second cup of बोला tea. था? Yeah. I haven't finished my first cup, but बहुत चाय पीती है यार, उसको मज़ा आता है, लेकिन वो कटिंग पीती है हमेशा. I love you, Chai. कैलकुलेशन ये पूरा ऐसे चाय मंगवाती है, वो इतना पीती है, इतना आधा रह जाता है, तो शी ऑलवेज ऑर्डर्स 30 ml. तो सुबह उसको 30 ml चाहिए होता है. See, the first शाम 30 को ml is 30 to ml dip चाहिए. my biscuits because if the tea is less, I cannot dip my biscuit. So the first 30 ml is to dip my biscuit. That's the logic. How Dip will I करने dip के लिए my- पूरा और चाहिए. कैसे dip करूँगी फिर उसमें? So I need the full cup, and when it gets cold, I cannot have cold tea. So इतना अच्छा सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ हमने नहीं जिया है. लेस यूजेस ऑफ एवरी नॉनसेंस स्टफ. प्लास्टिक हो गया, कुछ भी हो गया. आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट 2 दिन में कोई भी प्लास्टिक हाथ लगाया है वेट क्लोथ्स. सो आई बॉट इट फॉर यू आल्सो बेबी. someone is actually talking about Baba Ramdev. Not a big fan, but आई एम आल्सो नॉट अ बिग फैन. आई डोंट नो व्हाई. करो करो करने से ही होगा. करो करो करो. So I'm sure we're gonna get a lot of hate in this video. I guess we're talking against him. Not talking against him, but we are It's not about their us. his It's fan. about us that we are not Yeah, able it's to a do. like personal thing. बोलते ही जाइए. मैं ना seriously I'm feeling it. I'm like I want to talk. I want to tell people. So I'm not able to record a lot of things. So ऐसे हो रहा है excitement में ये भी बोलना है, वो भी बोलना है. I don't have any information or any feeling that we are feeling here. So मुझे मज़ा आ रहा है खाते खाते ऐसे बात करने. I have to admit, the first day I could not sleep the first night because I'm not used to this place very much. I was a bit scared of insects and reptiles. There are millipedes and all. It's really creepy. So the first 40-45 minutes I could not sleep. I mean, and the roof, you can hear the raindrops clearly. Drop by drop, you can listen to that. So every drop would scare me out. Differentiate the sound of different creatures. Yes. मेरे से नहीं होता. So we gotta call again. जाने से पहले. So this is what happens. This is what happens. This is what happens. We haven't done with our breakfast. It's Yeah. still there. Say bye. Say bye. Beta bye bolo. Okay. Bye bolo. Bye. So she is our roomie, Priyanka. Feel the doggy? Can you pet him? He wants to come inside the car because he knows that I'm the only person who didn't say hi. So I can say hi from here. Hi. Because he was crying that he's like, all of you Yeah. people are here, say hi, how's it going? Hello, भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ाओ. आगे बढ़ाए. चला. तो लड़ना चाहिए यार. अभी तो गाड़ी आगे बढ़ो बोल रहे थे. अरे बाद में मैंने देखा ना, दूर से दिखा नहीं, मैंने देखा नहीं, अपना ही बंदा है. प्यार मोहब्बत ज़्यादा है. दोबारा से एक्शन हो जाए प्लीज. आई वाह. He's the one who was a Shah Rukh Khan fan. फैन नो अभिनय. अभिनय. So we are at the Netravali Wildlife Sanctuary finally. अरे नाचो, अच्छा जरा नाचो. नाचो जरा. ये कौन सा step? कौन सा था? कौन सा step? Oh, चमक चलो, I got that. नहीं आई रिमेम्बर द अदर वन. Even I. चिकने. पैसा निकालना. क्यों? मैं नाची तेरे लिए. पैसा निकाल, मैं भी नाची तेरे लिए. सो आफ्टर एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट हम लोग बहुत सारा मस्ती करते हुए, खूब सारा फिल्मी डायलॉग देते हुए, बहुत ही सीनिक रूट से नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गए. उससे पहले का रूट भी बहुत ही सीनिक था, लेकिन नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बहुत ही सुंदर सीन है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो. फाइनली वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वाटरफॉल ट्रैक. वीडियो ले ऐसा. Okay. There's Parish Rawal from Gulgulaiya. So he is scared of Manjulika. कोई शर्म नहीं है कहने में कि मुझे डर लग रहा है. झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो. So I have the same feeling. झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो. What is this? There are markings, so it's okay. We will not be lost. So we are off to a waterfall. It's a beautiful waterfall here. और मज़ा आ रहा है सबके साथ.
want to see this place, you need to come to Tanshika Spice Farm Yeah. and let them know that you want to visit this place. Yeah. So पहुंच जाते हैं, मेरी सांसें फूल रही है. So पहुंच के बात करते हैं. Somebody else's house now. So you can't be making noises and disturb them. Even we would not like it. अगर मेहमान हमारे घर में आके हल्ला मचाए, राइट? हम बहुत ही केयरफुली जाने की कोशिश कर रहे हैं. Look at our feet. ये हालत हुआ है हमारे साथ. दलदल में फंस गए. दलदल. Clay Yeah. pedicure, Yes. We're getting our pedicure done. Free of cost. face mask. Yeah. I don't know if you guys can hear it. We can already hear the noise of the waterfall. I'm so sweaty. But yeah, it's that side for sure. क्या मस्त आवाज़ आ रही है ना. इतना मस्त आवाज़ आ रहा है. Wow. Must be a big waterfall. छोटा तो नहीं लग रहा है आवाज़ से. But we don't know yet. Yes, 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 guys. चलो थोड़ा पास से दिखा. This video doesn't justify the beauty of this place. Trust me. Jumur, tired Jumur? चलो बेटा पानी देखो. आओ. I'm liking it because I'm walking out. That reminds me of Bahubali. Nice, man. Anyway, we are going there, so let's quickly go there. लोग कभी नहीं समझेंगे कि वो बैग रखा गया है. The bag is kept to put all this litter inside that. Not there. उधर नहीं, इधर होना है, इधर. Of the same point again. कैसा फील हो रहा है जुमन? वैसे अभी तक तो अच्छा ही है क्योंकि हम आराम से उतर रहे हैं अभी तो. बट असली मज़ा तो तब आएगा जब हमें ऊपर आना होगा. ऊपर आना पड़ेगा. छींटे इधर तक पड़ रही है. लाइक इट्स रेनिंग हियर. एज यू कैन सी इतना सुंदर वाटरफॉल था ये. इतना सुंदर वाटरफॉल था, वो भी नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और फुल्ली मेंटेन्ड नेचुरल हैबिटेट में. कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. करंट भी इतना स्ट्रॉन्ग था एंड आसपास के पूरे जगह पे ऐसा लग रहा था बारिश के छींटे पड़ रही हो. और एज़ यूजुअल हम यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारा मस्ती किया. हम लोगों ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया और हम लोगों ने यहाँ पे एक तो एक्टिविटीज़ भी किए एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. कोई कोई प्लेसेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है वर्ड्स में समझाना, और ये वाटरफॉल वाली जगह उनमें से एक थी. इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुट माई फीलिंग्स इन वर्ड्स. और जो हमने वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह किया था वो भी इट वाज़ रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज़ एंड इट्स सिग्निफिकेंस. माना जाता है कि वाटरफॉल, स्प्रिंग्स, रिवर्स, दे होल्ड अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अक्रॉस कल्चर्स. बहते हुए पानी को, फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंटेशन माना जाता है कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ, रिन्यूअल और क्लेंजिंग को. और इन द रेल्म ऑफ ओकल्ट साइंसेस ये भी माना जाता है, और एक फैसिनेटिंग बिलीफ भी है, दैट वाटर कैरीज मेमोरी. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, वाटर बॉडीज़ जो हमारी नदियाँ हैं, झरने हैं, वाटरफॉल्स है, वो रिपोजिटरीज ऑफ एनर्जी और इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो वो आसपास के एनवायरनमेंट से कलेक्ट करती है. वहाँ पे जो हमारी एक छोटी सी और प्यारी सी एक्टिविटीज़ हमने की थी,
इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था, इसी वाटर कॉन्सेप्ट के ऊपर था, विच कैरीज एनर्जी एंड मेमोरी एंड काइंड ऑफ वी ऑनर्ड आवर एंसेस्टर्स एंड द नेचर जो कंटिन्यूसली हमें लाइफ दे रही है, सस्टेनेबिलिटी दे रही है इस अर्थ को, इस दुनिया को। एनीवेज, यहाँ पे ही इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यस गाइस, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटा सा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड इफ़ यू कैन लीव अ कमेंट दैट वुड बी ग्रेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।